हाँ जी बिल्कुल दे दो आप। So we are doing a case of 47-year-old with episodes of recurrent abdominal pain and history of jaundice. ERCP showed distal CVD stricture. IgG4 was raised at 2 times, like twice upper limit of normal. So with that suspicion, we are doing a diagnostic अब यहाँ EUS. पहुँच गए ना तो आप सक्शन द एयर, ऑल द एयर, सक्शन सक्शन सक्शन, इसको कोलैप्स कर दो, ठीक है, कोलैप्स कर, थोड़ा सा और कोलैप्स करो, तो वो आपका ना सक्शन म्यूकोजा के ऊपर थी इसलिए एयर नहीं निकलती। अब बिग वे टूवर्ड्स यू थोड़ा सा और वापस करें एंड रोटेट टू द राइट स्लोली, रोटेट। वो आपका लिवर आ रहा है ना, आ रहा है, चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाओ, इसको जरा बड़ा कंट्रोल। ओके, तो लिवर जब आपका आ जाए 2/3 ऑफ द लिवर इसको लेफ्ट साइड पे कर दो और 1/3 राइट साइड पे कर दो, ठीक है। तो आप फुल बैक अवे टू द स्टे देयर। अब रोटेट करें और राइट की तरफ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमने एओर्टा पे आना है, ठीक है, गुड, चलते जाओ चलते जाओ। ये आईवीसी आ गया, ठीक है। कई दफ़ा ना आईवीसी एओर्टा की तरह लगता है, लेकिन अगर आईवीसी आपको लिवर नज़र आएगा दोनों साइड और कोलैप्स हो, ठीक है। तो चलते जाओ, ये आपका एओर्टा आ गया ना, ठीक है। आप थोड़ा सा बहुत अच्छा किया आपने, यू रिलीज द व्हील, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ठीक है, गुड। अब इसको जब एओर्टा आ जाए ना तो इसका जो देखें कि सेंटर में, ठीक है, अब सेंटर में आ गया ना तो आगे चलते जाओ स्लोली और थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट करें ताकि आपकी सीलियक यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब लग रहा है कि ये यहाँ पे है, लेकिन कई दफ़ा ना वो लेफ्ट राइट आप करो, ये यहाँ पे बिग व्हील लिटिल बिट अवे फ्रॉम यू, थोड़ा सा लिटिल बिट अवे, लिटिल बिट अवे, आ गया जबर, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट अगर आप थोड़ा सा और पुश करो, थोड़ा सा, अब SMA उसके नीचे आ गया, ठीक है, सॉरी, सीलियक हियर, SMA हियर, ठीक है। अब इस पोजीशन में आप न्यूट्रल स्कोप है, ठीक है। अब हमने फॉलो करना है, हमारा लैंडमार्क क्या है यहाँ पे, सीलियक, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट करो स्कोप को राइट की तरफ, थोड़ा सा, जबरदस्त, ठीक है। अब फॉलो करो इसको। फॉलो का मतलब ये है कि आपने स्कोप को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और व्हील आहिस्ता आहिस्ता रिलीज इस तरीके से करना है कि ये सीलियक इसके नीचे रहे। जो भी चीज़ हमने एग्जामिन करनी है ना, दैट शुड बी बिटवीन 5 and 7 o'clock पोजीशन, ठीक है। चलते जाओ चलते जाओ। अब आपके ये देखें यहाँ पे मेन ट्रंक सीलियक का ये था, ठीक है। लग रहा है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक ना यहाँ से आ रही है, ये नजर आ गई लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट की तरफ जाती है, आपने उसको भूल जाना है, ठीक है। फिर आपने फॉलो करना है मेन ट्रंक, बिग बिग टूवर्ड्स यू, ठीक है। दोबारा जाओ उसको वापस करो, ये ठीक है, राइट देयर। आपने मेन ट्रंक को फॉलो करना है, मेन ट्रंक को फॉलो करना। फॉलो का मतलब है थोड़ा सा स्कोप एडवांस एंड रिलीज द व्हील, ठीक है। वो जो आपकी कॉमन हेपेटिक थी वो नीचे कहीं चली गई है यहाँ पे, लेकिन आप यू गॉट स्ट्रेट टू द पैंक्रियास, ठीक है। बिग विल टूवर्ड्स यू, बिग विल टूवर्ड्स यू, बिग विल टूवर्ड्स यू, देखिए ये आपका पैंक्रियास है। तो ऑटोइम्यून में कई दफा दैट्स व्हाट यू आर सस्पेक्टिंग एंड इट लुक्स लाइक अ मास फॉर होल पैंक्रियास। रिलीज द व्हील, बिग विल अवे, बिग विल अवे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंटेंट करना है, पैंक्रियास को सेंटर में रखना है, ठीक है। ये पैंक्रियास है, रोटेट करें राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ, पूरा पैंक्रियास है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैंक्रियास है, छोटी सी डक्ट है उसमें, विच इज़ द जो कि ऑटोइम्यून में होता है, आपकी डक्ट छोटी होती है, लेकिन बर्nt आउट ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस में डक्ट बाद में बड़ी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डॉक्टर को मैं निकाल दूँ वापस, इसको सेंटर में लेते हैं, क्या करेंगे, नो पुल द स्कोप बैक। अगर ये इस तरफ भाग रहा है तो पुल द स्कोप बैक, अगर ये उस तरफ भाग रहा है तो पुश द स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे ज़बरदस्त, यहाँ पे देखिए पूरा पैंक्रियास यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे है पूरा पैंक्रियास। अब ये अगर रोटेट करें, ये नज़र आ रही है, ये ऊपर और एक नीचे, स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्म, ठीक है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, आरटी का कभी कोर्स होता है जिग सा होता है, कई दफ़ा आपको दो जगह पे ये नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त जो है ना, हमने भूल जाना है हर चीज़ को, पैंक्रियास हमें नजर आ गया, ठीक है। यहाँ से
पैंक्रियास को सेंटर में रखना है। शनिए पानी की बोतल ला दें, तो इसको पुल बैक करना है, रोटेट टू द राइट, रोटेट टू द राइट, रोटेट टू द राइट, रोटेट टू द राइट। या आपकी स्क्रीन इस जगह, ठीक है, और आपका पैंक्रियास यहाँ पे खत्म होगा। पूरे का पूरा पैंक्रियास जो है ना, वेरी प्रोमिनेंट हाइपोइक्वेट, छोटी डक्ट, ठीक है। तो सारे पैंक्रियास का तो कैंसर नहीं होगा ना अब, तो मोस्ट लाइकली इट्स ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा पुश करो, बिग वी टूवर्ड्स यू, बिग वी टूवर्ड्स यू, बिग वी टूवर्ड्स यू, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ठीक है। बिग वी टूवर्ड्स यू, ठीक, तो फिर उसको पुल करो, रिलीज करो, आप रिलीज करो, रिलीज। अब है ना, मैं ऐसा में पोर्टल वेन लेके आना चाह रहा हूँ, वो सही तरह आ नहीं रही व्यू में। मैं 1 मिनट देख लूँ, हाँ जी, गुड, 1 मिनट। ये इस तरफ है नीचे, बट विल टेक अ लुक एट द पोर्टल वेन फ्रॉम द्वार, ठीक है, ठीक है, चलो अब द्वार में तो इसमें ये दिस इज वो सॉसेज शेप्ड इज अ टर्म यूज फॉर सीटी। तो एक सास पूरा सॉसेज का देखी हुई है जो अमेरिका, वो एक बड़ी जो है ना, बिल्कुल एक वो गोश्त होता है, वो एक लंबा एक लोथड़ा सा होता है, राउंड वन, ठीक है। तो उसका उसी की तरह के नज़र आता है, लेकिन होल पैंक्रियास, तब वो सीटी की टर्म है। और इसमें भी सॉसेज शेप इस तरीके से कह सकते हैं कि द होल पैंक्रियास इज प्रोमिनेंट, ठीक है, और लुक्स अलाइक थ्रू आउट। तो आप ये आ गए, ठीक है, गुड, चलते जाओ, ओके। ये आप नीचे पोर्टल वेन इस जगह आ गए, ठीक है, लेकिन ठीक है। अब ड्वार्न अबव में चलो, ओके। तो दोबारा उसी तरह जाना है, ठीक है। स्टे इनटू द स्टमक, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, हाँ, बड़ा कर दो, ओके, चलते जाओ, ठीक है, जेंटली, जैसे आप फॉलो करो, ठीक है। अब वो स्टमक इधर जा रहा है, तो थोड़ा सा इस तरफ रोटेट ऐसे करो, ठीक है। तो बिग विल टूवर्ड्स यू। अब यहाँ पे रुक जाओ। अगर आपका पाइलोरस आपको इतनी नज़दीक, इफ इट्स दैट क्लोज टू यू, आपका ट्रांसड्यूसर नीचे हिट करेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ओके, एंड बिग विल टूवर्ड्स यू, आप पुश करो, बिग विल टूवर्ड्स यू, नहीं हो रहा, हो जाए, चलो हो जाएगा, अब हो जाएगा, चलते जाओ। फिर भी जो है ना, थोड़ा सा नीचे था, लेकिन आपने एडजस्ट कर लिया उसको, ठीक है, गुड, ठीक है। तो अब जो है, इसको इन्फ्लेट करो, इन्फ्लेट करो, ठीक है। बिग व्हील अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम यू, ओके। एपेक्स आपकी इधर है द्वार, ठीक है। अब आपने कैमरा यहाँ पे डालना है, लेफ्ट अपर कॉर्नर, बिग व्हील टूवर्ड्स यू, और रोटेट टू द राइट। थोड़ा इसको बड़ा कर दो, यूएसए इधर ही ठहर जाए, ठीक है। पुल पुल बिग व्हील टूवर्ड्स यू, पुल बैक अ लिटिल बिट, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। ये आपकी बाइल डक्ट है वहाँ पे, आपको पता चल रहा है ना, और स्टोन भी है, ओके। पुल बैक, स्कोप, पुल बैक। अगर ये इस तरफ जा रहा है ना, तो आपको इफ इट्स मूविंग टू द राइट साइड, यू हैव टू पुल द स्कोप बैक, pull the scope back, big wheel towards you, big wheel towards you, okay, you fell back, go back in there,
ठीक है, यहाँ पे बस इधर ही। ज़्यादा कई दफ़ा आपको ना रीएडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द यूएस इमेज, ठीक है। तो अब ये वॉल काफ़ी थिक है। इज़ इट अ गॉल ब्लैडर और इज़ इट अ बाइल डक्ट? इट कुड बी अ गॉल ब्लैडर एज वेल। तो हमने जो है ना, नहीं ये बाइल डक्ट अब यहाँ पे लग रही है, ठीक है। हाँ, इट्स अ बाइल डक्ट। रोटेट करो राइट की तरफ। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ राइट की तरफ तो आप थोड़ी हेल्प करो। हाँ जी, इन्होंने इनका स्टैंड डाला हुआ है। स्टैंड डाला हुआ है स्टैंड है यार, या स्टैंड डाला हुआ है। एक मिनट। स्ट्रक्चर लिखा है स्टैंड डाला नहीं हुई है। पक्की बात है। स्टैंड डाला होगा ना या ठीक है, कोई बात नहीं, इम्तान ले रहे हैं आप। ये जो है, नहीं कोई बात नहीं, स्टंट है इसमें। जिसने ईआरसीपी की है पहले स्टंट Hydraulic stent can also cause thickened wall. इट कैन, या It is quite common. आई डोंट थिंक इट्स अ बाइल डक्ट, इट मे बी अ गॉल ब्लैडर। इनका गॉल ब्लैडर है ना अभी? बेटा गॉल ब्लैडर है, ऑपरेशन हुआ है इसका, बच्चे का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ठीक है। You gallbladder. You look at this is a thick. No, it is. Yeah, this is gallbladder. Yep. So I think that is also part of the gallbladder, and that was the with the stone. जी. कोई बात नहीं। डॉक्टर आपकी बात इसको इवेलुएट करने का पड़ेगा हेड को ज़्यादा फ्रॉम द D2. So here, this is very thick. I'm still not 100% sure if it's a part of the bile duct or it is the part of the gallbladder. But we will have much better idea. I think it's a gallbladder, right? Very thick one. And this is, I think we're kind of getting an idea now. This is the neck of the gallbladder. If I follow that towards the liver, this is the cystic duct coming off, ठीक है? Cystic duct coming off. बीच स्टेंट हमें नजर आया था, तो मेरी सीबीडी इसको लैप्स And in these cases where you're not sure, you can always go to D2 स्टार्ट from there. from there. मैं अभी आपको ना D2 का एग्जाम दिखाता हूँ। मैं just so that is the stent. You guys can see the stent right here. ठीक है? गॉल ब्लैडर का भी नहीं निकला। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ये स्टेंट आ रहा है, स्टेंट है। You can clearly see a stent in the viaduct. Viaduct is completely collapsed. I don't see the, and so is the pancreatic duct is also, it all favors probably. But Halbhai, with this much stone in gallbladder, shouldn't they remove? Of course, sir, and gallbladder, yeah, That might be causing this pancreatitis. absolutely. And I think that stone is in the neck of the gallbladder because I can still see the, you see where the arrow is?
I mean, stent has a ear in it, but what we were seeing is what was the Was the neck of gallbladder the neck, distended. yeah, neck of the gallbladder. ठीक है. तो इसमें, let me see. If I look here on the lesser curvature, see the gallbladder right there, and from the stomach, that's all gallbladder, gallbladder, gallbladder. He has a very thick gallbladder wall. Exactly. Normal thickness कितनी होगी gallbladder wall? Or about, but you can see the layers of the wall, so it means cracked falling information. तो जब आप D2 में जाएंगे ना, साकिब, once you are in the D2, ठीक है, just like a regular ERCP scope, there are two ways to examine the and do the D2 exam. We see the ampulla right there, that stent is coming out of. One thing is I can directly take a look at the ampulla, put my scope, lens right, camera right on there, so I'm distal to that. Okay, so I will pull the scope back, and my goal here is if I don't find the pancreas, which we find here, okay, we see the pancreas is right there. This is all pancreas, we see that. But if I don't find it, I will do, like I'll get into the ERCP scope position and do and right and left. My goal is to find the aorta. Aorta is a tubular structure right here, which is non-compressible, okay. I bring the aorta in the left side. From GE junction, it was on the right side, landing towards the left side. This is, it's completely opposite. So from here, just remember the SMA will be coming off somewhere here and going that way, backwards, okay? But once you find the aorta, so if you go left from there, first thing you will see is IVC. You see that? IVC? And then if you go further to the left, you will either see the right kidney, which is right here. You see that? And or you will see segment 5 or 6 of the liver. So you see that right kidney right here. So from here, rotating to the right, you see IVC, you see aorta. Pull the scope back a little bit from aorta and rotate to the right. And that will take you to the pancreas. Once it takes you to the pancreas, first thing you will see is the bile duct. Right there, stent. In this case, we see the stent right there. So here, just rotating to the right, clockwise. Stent. If I rotate further to the right from there, you will see the PD, which is not really visible in this one because it's all compressed. Again, like a micro PD, because it's likely is autoimmune pancreatitis. Okay? So I would treat this guy for autoimmune pancreatitis because if it was a focal, this hypoechogenic area, only in the head and not in the body and tail, then it's a cancer until proven otherwise. Okay? But it's diffused involvement. It's diffuse involvement. And if he doesn't get better, then we should bring him back and do a biopsy to make sure that we're not missing anything major there. Okay? So here, bile duct. From there, if I rotate to the right, there is a PD. You see that small one? Right there. That's the PD. So the most right in this position, scope straight, PD. If I go further to the left, bile duct. If I go further to the left, aorta. If I go further to the left, IVC. If I go further to the left from there, then it's going to be either the kidney Can you hear or... us? Gee, I can hear you, yes. क्वेश्चन ये है कि आप इस वक्त इसकी बायोप्सी लोगे? Can you speak up a little bit? आप इसकी इस मौके पे बायोप्सी लोगे? I am thinking still treating him, this was we were talking about, I'm still thinking maybe treat him with the steroids as an autoimmune because the whole pancreas looks like a mass. And if we do a biopsy, I don't think it's unreasonable either because it is really, he has a history of weight loss and this looks like a kind of a mass here, but that also does look in autoimmune pancreatitis as well. If
This was actual real mass. I expect it to cause dilation of the pancreatic duct in the body and tail with atrophy of that. But I don't see that in the body and tail. I don't even see the duct in the body and tail. So whole pancreas is the same echogenicity throughout, and for a cancer it's highly unlikely to do that. Autoimmune pancreatitis, however, would do it. My personal in this one would be treat him as an autoimmune pancreatitis. We have evidence IgG4 levels elevated. Whole pancreas looks like autoimmune pancreatitis. If, however, he doesn't respond in 4 weeks, bring him back and then do the biopsy. That would be my approach. And but I'm happy to. Having said that, it is not unreasonable in this case to do the biopsy. Well, by being the devil's advocate, why not we treat him as a gallbladder stone disease, get his cholecystectomy, clear his CVD and see how it goes on? Yeah, that would, but that would not cause these changes in the pancreas, would not have caused. That would cause acute pancreatitis, or if it was going to be recurrent acute pancreatitis because of that, your pancreas would not look like that. So Right. could he have two processes going on? Yes. And but that gallstone disease should not make pancreas look like Disappearance that. of Yeah, pancreas. yes. खालिद, जी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने IG4 स्टेनिंग की है इस मैच पे पहले? इसकी mass की IgG4 staining जो है ना, that is a last resort. So first, when you have IgG4 serum levels elevated and you have a clinical suspicious of autoimmune pancreatitis, you treat it as such. If you have IgG4 negative but clinical suspicious is high, that could be type 2 or IgG4 negative autoimmune pancreatitis. In those cases, you still can treat them, or you can do a ampullary biopsy and send it for staining for IgG4 levels. If that is negative, you still haven't treated, treatment didn't have an effect. In those cases, as a last resort, you do the biopsy of the pancreas and look for plasma cells in there. अगर आपने बायोप्सी लेनी होगी तो आप किस जगह से बायोप्सी लोगे? क्योंकि If I need to, yeah, if I need, भी है, तो कौन सी so I would avoid, I would find an area where I think there is a least chance of hitting the pancreatic duct. So I would not go for the tail, I would not go for the body. You have a higher chance of hitting the pancreatic duct in there. I will find the area in the head of the pancreas where I'm away. I will find my bile duct right there. I know the PD is going to be right underneath. I will rotate further to the right and then try to take a biopsy from that area. And so you are not wrong in taking a biopsy from the body as well. If you can just avoid the area of PD, avoid the pancreatic leak. So any area should be fine. Does it not look more discrete mass like खालिद, क्वेश्चन है कि acute pancreatitis can also give a similar picture. This is not, no, acute pancreatitis. Here, actually, that's a good question. So, acute pancreatitis, if it's gonna be like this, you suspect some sort of fluid around the pancreas. That's one thing. Second thing is, your boundaries of the pancreas, they would be spiky. Spiky means it's like they are like this, and that is called not a speculation, it's a speculation, SPI. That term is used for those heterogeneous edema at the surface. So that one would be one thing, and fluids around that. But in acute pancreatitis, sometimes the whole pancreas is not going to look like this. This is a chronic ongoing process, again favoring autoimmune pancreatitis. If it was just chronic pancreatitis, I expect ductal changes, ductal dilation, side branches, some maybe a calcification in there. So which I don't see there.
calcification, just we use this, there is a terminology like parenchymal, there is a calcification. That is not the correct terminology. That stones and those really ducts. So if you see a lot of those stones, they are in the side branches, not really in the parenchyma. They never develop in the parenchyma. So here, the same thing, like right there, you see the bioduct now, the stent I mean. So from there, going to the right, we saw the PD, very small PD right here, very small. And other important point is, yeah, so here, other important, you are in the D2 and you see the bioduct right here, you see the PD, very small here. This is the area which is uncinate process. I can clearly see a boundary here, but I'm not fully 100% sure that I have seen the whole uncinate until I have seen the SMV and SMA right here, okay? If I put a Doppler on there, you see the arterial flow there, so that SMA. SMV, which is superior mesenteric vein, is always going to be close to the surface of the pancreas, and SMA is going to be below that. Let me put that on there, and you see the venous flow, continuous venous flow there, right there. And arterial flow, venous flow. Now, what it is, I am happy that I have seen the whole pancreas and I did not miss any part of the uncinate there. Okay? You guys, you guys okay treating it with the giving it a trial? And if it doesn't get, then I'm happy to make you feel better. But I think we can. I feel comfortable treating as such. इसकी elastographic characteristics का कोई फायदा होगा? Saad bhai, I don't use much. Do you have elastography in this? हाँ, EME plus है. We do. So. So Khalid, it appears to be blue. Blue is bad. It is not working very well. Just comes and goes. I honestly don't use much elastography. We use contrast here and there, but I don't use much of that. So what will be you're looking for? In this one, you are looking for a lot of blue in there. And green, if it's a mix of that, green and blue, then it's likely it's not anything major. So if it's like a dark blue in one area and green all around in that, so
that would be the what I was. Khalid? G. पॉसिबिलिटी है कि जो जहाँ पे ब्लू एरिया वहाँ पे कोई प्लास्टिक टिश्यू और बाकी एक्यूट इन्फॉर्मेशन ही हो, खाली एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो। It is there, like I say 100%, but the reason I am and if you look at it's a combination. Whenever it comes, lot of green lines in there, so it's like a I don't think it's really a blue what we are looking for. And if I put this on the body, let me do the one thing. Let me see what is on the body area. It's giving the same here. It's not like there are a lot of green pattern in there. You see that? Blue and green combination. So I don't think it is cancer in there. If it is, it's a very extensive. Or IgG4 is key high. Let's treat it. If it doesn't get better, bring him back and just do the biopsy. Okay. क्या हुआ? इसको जो है ना ये प्रेस करना पड़ा वापस से इसको फ्रीज हो गया चलो कोई बात नहीं but we are done with the exam so that it should be okay. Okay. अगर वो ये फ्रीज हो गया I don't think they use elastography much. It got stuck. दोबारा इसको ऑन ऑफ कर दो सिस्टम को. अगर वो नहीं है तो सिस्टम को ऑन ऑफ कर लें हम. escape पे जाती है। चलो. How would a TB in pancreas look like? You tell me. Will be more discrete with lymph nodes. I have never seen a TB in the pancreas in US, honestly. So I don't know how it looks like. Okay. Saad bhai? Yeah, the question is how would pancreas look like in TB? I have never seen a TB of the pancreas. Do you have any experience? Say it again, समझ नहीं आई क्या बोला आपने? Tuberculosis pancreas. TB in pancreas. Basically, it's not the tuberculous nodules are not in the pancreas, rather it's in the lymph nodes around the pancreas. The few cases that we diagnosed as the periimpulmonary patient came as a possible periimpulmonary tumor based on CT and MR, and while doing US we realized it's basically it's a nodal mass, and on biopsies we found that there's necrotizing granulomatous inflammation. So more lymph node disease than pancreatic disease. Okay, there you go. Go. So are we done with the case or what's the plan? Kafi hai? Okay. साकिब आपने गाउन पहना हुआ है? हाँ? एक कौन दे दे सब? Can you pass me gloves? सिर्फ ग्लव्स दे दो.
एक दफ़ा आप देख लो, D2 एक दफ़ा देख लो बस, You don't mind? और उन 3 दफ़ा कर Follow-up phase, do you think along with IgG4 level we should repeat the CT scan as well? आई थिंक सो, पूरा कर लो वो After 4 weeks of आफ्टर 4 वीक्स ऑफ स्टीरॉइड्स, यप। तो आप यू आर इन D2 ऑलरेडी, मैंने कर दिया आपको, और यू कैन रीएडजस्ट योरसेल्फ इन D2। गुड, गुड, ठीक है, जस्ट राइट ऑन दैट, गुड, परफेक्ट, सक्शन, हाँ, सक्शन। अब थोड़ा सा पुल बैक करें, थोड़ा सा पुल बैक करें, तो before going, yeah, right there you see the pancreas is right in the upper corner, but what I would suggest is go to the left, find your, Aorta. or